Hello students. Today we are going to start with our chapter number 5, arithmetic progression. First, I want to explain you the arithmetic progression definition. What is the definition? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. The fixed number is called common difference of the AP. It can be positive, negative or 0. For example, 2, 4, 6, 8, 10. Second one is 1, 3, 5, 7. In my previous video, I can explain you about this series and how it will work. How can you find the first term, second term, third term and the last term? What is the common difference? If you are not seen my video, then please see the previous video, then you can explain 100% that what is the process. Now, general term of an AP, even. What is an even? Even is 2, 4 is A2, then 6 is A3, 8 is A4, 10 is your A5, and if you know what is the nth term, then you can write it is a nth term, means 5 is your nth term. But if you are not known, then you can write like this dash 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 en dash dash, then there are lots of numbers. What is the general formula of en? En is equals to a plus n minus 1d, where a is your first term, d is your common difference and n is your number of terms. Now, the second formula of general term for nth term for the last number, en is equals to l plus a plus n minus d, where L is your last term, Sn. If you have to find the sum of the nth number, then you have a formula Sn is equals to n by 2 a plus an, or S is equals to n by 2 twice a plus n minus 1 d, where a is your first term, L is your last term, D is your common difference, N is your total number of terms, En is equals to nth term, where N is equals to 1, 2, 3, dash dash, so on. Sn is your sum of first n numbers, where if you find the A1, how can you find A1? A1 is equals to A, it is denoted by A also, is equals to A plus 1 minus D is 1 minus 1, that is n minus 1, this formula. Okay, D. A, if you find the A2, then A plus D or A plus 2 minus 1D. A3 is equals to A plus 2D is equals to A plus 3 minus 1D dash dash, so on. If you find the An, then what is the formula? An is equals to A plus n minus 1D. Let's start with our exercise 5.1. Your first question is, in which of the following situations does the list of numbers involved makes an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. Now, what is given there? Your first term is given, which is A is equals to rupees 15. Then you can write like this, A is equals to 15. Then in which this is given there, what is your A1? A1 will be 15 plus 8, because in this question what is given कि टैक्सी फेयर जो है, टैक्सी का किराया जो वो हर किलोमीटर के बाद में आपका जो है 15 रुपीज़ है, और फर्स्ट किलोमीटर पे आपका 15 रुपीज़ है, और उसमें जितने भी आप एडिशन करते जाएंगे हर किलोमीटर पे आपका जो है उसमें 18 रुपीज़ बढ़ता जाएगा. मीन्स A1 इज इक्वल्स टू योर 23
यदि आप A2 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस द सेम, देन व्हाट इज दिस, A2 विल बी द 23 प्लस 8। आपको हर उसमें अपना जो है 8 को ऐड करना है जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। देन व्हाट विल बी, इट विल बी द 31। देन इन A3 क्या हो जाएगा आपका, 31 प्लस 8 इज़ योर 39। ओके, देन A1 is given to you, then A2 will be 23, A3 will be 31, and A4 will be the 39 dash dash. Like this you can find the other values also. Now the question number second, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump revolves 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कि आपके पास कितना है सिलेंडर में एट ए टाइम जो है एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। जब हम उसमें वैक्यूम पंप से रिमूव करते हैं 1/4 ऑफ एयर, तो रिमेनिंग जो बचा है उसको निकलने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा। देन हाउ कैन वी सॉल्व इट, फर्स्ट लेट द अमाउंट ऑफ एयर in cylinder that will be E1 is equals to x. We can assume that it will be x because we don't know about it. Okay, then amount of air left after first removal, जब हम पहली बार उसमें वैक्यूम से निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, दैट मीन्स A2 is equals to what, A1 minus given that, then what is given, x minus 1/4, okay, by 4x. Now we can take the LCM, then it will be the 4x minus x, it will be your 3/4x. Okay, then removal of second, after removal what is the amount will be left, then it will be the 3/4 by x minus 1/4 3/4 x. then on solving it, देखिए यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/4x minus 3/4 4 is 16x. Then we can take the LCM 16, 12x minus 3x, then there will be the 9/16. Okay, then no, that will not cut, then we have find the 9/16x. That's why no, it is not a AP. This equation is not becoming a AP because 3/4x. Now second one will be the 9/16x, then it will not be the, it's not will be the your AP problem. Now question number third will be the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, then cost of digging
1 meter deep, that will be the A1 will be the rupees 150 given. Then cost of digging at the second meter 2 meter deep, it will be the A2, then rupees 150 plus 150. Sorry, 150 plus 50, because in the first will be given which is 150, your second will be rises to 50, then A2 will be your A2 is your 200 rupees. Now the cost of digging 3 meter deep, then A3 will be what? 200 plus 50, it will be rupees 250. Okay, now the cost of digging for 4 meter is A4 is equals to rupees 250 plus 50, it will be rupees 300. Yes, it is an AP, because by the definition we know that the numbers are preceding with a fixed number or a constant number, rises with a constant number. Okay, now the question number 4, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Okay, let's start with our question number 4. First, given that rate is equals to 8% per annum and principal even is equals to rupees 10,000. Okay, then after 1 year amount will be, that means A2 will be 10,000 plus 1 plus 8 by 100. Then on solving it we get rupees 10800. Okay, and after 2 years amount will be A3 will be 10800, 1 plus 8 upon 100 square. On solving it we get rupees 12597. Then what we see here, that this is not a AP. Okay, no, it's not a AP. Okay, start now. Question number 2. Write first 4 terms of the arithmetic progression when the first term A and the common difference is D and given as below. Okay, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको फर्स्ट टर्म भी दिया है एंड द डिफरेंस भी दिया है. A इज इक्वल्स टू 10 एंड A प्लस A एंड D इज इक्वल्स टू 10. तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है? A1, A2, A3 एंड A4, 4 टर्म्स निकालना है. तो हम जानते हैं कि A1 इज इक्वल्स टू A, देन इट विल बी 10. देन A2 फाइंड करेंगे तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? A प्लस D, दैट मीन्स 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20. नाउ A3
a plus 2d. Then a, what is your a? 10 and 2 multiplied by 10. Then 10 plus 20, that will be 30. Now a4, a plus 3d is equals to 10 plus 3 multiplied by 10. Then 10 plus 30 is equals to 40. Then your first term will be 10, second term will be 20, third term will be 30 and the fourth term will be 40. ओके, लाइक दिस. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे. यहाँ भी वही करेंगे. देखिए हमारी a1 इज इक्वल्स टू a होता है जो कि हमें दिया हुआ है -2. ओके, देन a1 विल बी 2. a2 फाइंड करेंगे, a प्लस d. देन व्हाट इज a? -2 प्लस 0, d इज 0. देन -2 हमारा आंसर आएगा. a3 फाइंड करेंगे, a प्लस 2d. a है हमारा -2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0. देन -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2. नाउ a4 फाइंड करेंगे, a प्लस 3d. देन -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0. देन -2 प्लस 0. आवर आंसर विल बी -2. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही हमारा a जो है a1 इज इक्वल्स टू a होता है विच इज़ गिवन 4. जब हम a2 फाइंड करेंगे, a प्लस d. ओके, जब हम a2 निकालेंगे तो a प्लस 2d. a हमारा क्या है 4 प्लस -3. देन इट विल बी 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1. जब हम a3 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2d. दैट विल बी 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3. देन इट विल बी 4 - 6 - 2. नाउ a4 will be a plus 3d. then 4 plus 3 minus 3. okay, 4 minus 9, then it will be -5. ओके, इसी तरीके से हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में हम a1 इज इक्वल्स टू a विल बी द -1, a2 a प्लस d. देन a इज अवर -1 प्लस 1/2. जब हम यहाँ से एल्शियम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, फाइनली हमें मिलेगा -1/2. ओके, जब हम a3 निकालेंगे, a प्लस 2d. इट विल बी -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा -1 प्लस 1, दैट विल बी 0. देन a4 a प्लस 3d. -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2. देन इट विल बी -2 प्लस 3 अपॉन 2. इट विल बी 1/2. ओके, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. यहाँ पे a1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1.25. हम a2 निकालेंगे, a प्लस d. दैट विल बी -1.25 प्लस -0.25. देन इट विल बी -1.25 माइनस 0.25. इट विल बी अवर माइनस हमारा कॉमन हो जाएगा और ये दोनों जब प्लस होंगे तो इट विल बी 1.50. ओके, a3 is equals to a plus 2d. then minus 1.25 plus 2 is multiplied by minus 0.25. okay, minus 1.25 minus
ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.50 इज इक्वल्स टू -1.75। और जब हम E4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा E+3D इज इक्वल्स टू -1.25 प्लस थ्राइस ब्रैकेट में -1.25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा -2। ओके,